Alright guys, now we're on the 6,190 meter and Kusang Kim already summit. Yeah. Yay! Come on guys, come on. Come on, Jack guy! Come on, Lily! Hi Rina, how are you? Hey! Hey, this is Rina Jordanis, vlogger. Keep vlogging guys. Keep watching guys. 6,190 meter! Yo! Ukuri tera de Yano hemba video. हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू कल्चर बॉक्स वंस अगेन, जहाँ पे आप अभी देख रहे हैं हमारे साथ नेपाल सीरीज। और नेपाल सीरीज में हमको काफ़ी सारी डिफरेंट चीज़ हम लोग आपको दिखा रहे हैं, इंक्लूडिंग द टूरिस्ट प्लेसेस, और साथ में हमने आपको दिखाई यहाँ की फेमस कुकरी। तो दोस्तों नेपाल है, और नेपाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे माउंट एवरेस्ट की बात क्यों ना हो, और अगर माउंट एवरेस्ट की बात हो रही तो डेफिनेटली उस पर एक्सप्लोर करने वाले वो जो प्रोफेशनल्स हैं उनसे हम क्यों ना बात करें और आपके सामने एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो लेके आए। तो आज की प्रॉपर ये वीडियो उस पर बेस है कि जो से लोग हैं जो एक्चुअली ड्रीम रखते हैं माउंट एवरेस्ट पर क्लाइंब करने का, या फिर वो लोग जो चाहते हैं कि एटलीस्ट इसके बारे में हम जान पाए कि क्या होता है, कितना डिफिकल्ट होता है, कितना ज़्यादा एडवेंचर होता है। तो डेफिनेटली उन लोगों के लिए ये परफेक्ट वीडियो है जो कि आज हम लेकर आ रहे हैं। और हमारे साथ है वन ऑफ द मोस्ट फेमस ऑर्गेनाइजेशन और द बिजनेस टैग नेपाल, जो कि यहाँ पे माउंट एवरेस्ट तक के चढ़ने तक का आपका ये ड्रीम पूरा करवाती है। और आज हम उन्हीं से बात करने वाले हैं। उन्हीं के हमारे पास मैनेजर हमारे साथ है मिस्टर गोविंदा। सो गोविंदा, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू कल्चर बॉक्स, एंड डेफिनेटली गोविंदा इज द पर्सन जो कि हमारे को पूरा का पूरा बताएंगे कि अगर आप भी वो ड्रीम रखते हैं तो आप कैसे कैसे फुलफिल कर सकते हैं। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं होता फॉर श्योर गाइस कि आप आए टैग नेपाल में एंड देन आपने फिर बोला कि हाँ मुझे माउंट एवरेस्ट चल रहा है, यू आर गुड टू गो। ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है और इसके लिए आपको पहले काफ़ी सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, काफ़ी कॉस्ट लगता है, टाइम लगता है, मनी लगता है, आपका विल पावर लगता है, और उन सब से मिलकर ही आप एक एवरेस्ट चढ़ पाते हैं। अगर मैं टैग नेपाल की बात करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मोर देन 30 पीपल अभी तक माउंट एवरेस्ट के पीक तक पहुंचा चुके हैं, और अगर इनके क्रू मेंबर्स को इंक्लूड कर दीजिए तो इट्स मोर देन 130 पीपल। तो इतना ये एक्चुअली अचीव कर चुके हैं, और इनके यहाँ पे काफ़ी प्रोफेशनल लोग हैं जो मोर देन 13-14 टाइम्स माउंट एवरेस्ट तक चढ़ चुके हैं। दे मेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो आज हम उन्हीं से बात करते हैं और आपको मिलाते हैं मिस्टर गोविंदा से, और साथ में आपको आपके ड्रीम तक पहुँचने का एक स्टेप फॉरवर्ड हम लोग आपको एक सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो लेके आते हैं। सो गोविंदा जी, आप पहले बताइए कि आप कहाँ से हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, like you're from? Namaste. Yeah, I'm originally from Nepal, of course, and I was born in Lamjung district, Okay, yeah. and Badagaon is my village name. Yeah. So I grew up until like kind of child age, teenagers in the village, and then I came here for my education. Nice. So after education, I'm doing like what I'm doing now. That's nice. तो फिर ये नेपाल के ही रहने वाले हैं, एंड गाइस गोविंदा हमारी जो भी बात होगी उसको इंग्लिश में बोलेंगे, एंड आई एम गोना ट्रांसलेट इट बिकॉज थोड़ा सा यहाँ पे एक गैप है छोटा सा इंग्लिश और हिंदी का। तो फिर डेफिनेटली आई विल बी द कम्युनिकेटर। और आप बताइए कि ये टैग नेपाल कब स्टार्ट हुआ, कब से आप ये लोगों का ड्रीम फुलफिल कर रहे हैं? I have been involved in the tourism is more than 12 years, and but we start to own this company now. It's beginning of 9 years. Okay. So we started to operate this Everest expedition from 2016. 2016 से आप लोगों का ये ड्रीम फुलफिल कर रहे हैं एवरेस्ट तक पहुंचाने का। Yes. Wow, 9 years का एक्सपीरियंस इज एक्चुअली अ ग्रेट अचीवमेंट आई वुड से। और उससे पहले आप और कौन से ट्रैकिंग करवाते हैं? Yeah, we operate like Everest Base Camp, Annapurna Base Camp, Annapurna Round. There is so many trekking trail in Nepal, and not only trekking, even though hiking, tours, paragliding. Nepal is home, or the kind of the kingdom of the adventure activities, Correct. So we have a lot of adventure activities, sports, or kind of trips.
or game or rock climbing. So many things is over here. So. वाह एंड दैट इज समथिंग गाइस. नेपाल एक्चुअली वो जगह है जहाँ पे वर्ल्ड की टॉप 10 हाईएस्ट पीक में से 8 नेपाल में ही होती है, और इस वजह से पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड के लोग यहाँ पर आते हैं अपना ड्रीम फुलफिल करने के लिए, अपने ट्रैकिंग और अपने हाइकिंग और एक्सपेडिशन और इन सब चीज़ों को फुलफिल करने के लिए ड्रीम यहाँ पे लोग आते हैं. एंड नाउ आई वुड कम टू द पॉइंट. अगर कोई इंसान है, अगर वो चाहता है, उसका ड्रीम है माउंट एवरेस्ट तक चढ़ना, जो कि समवॉट कभी कभार मेरा भी ड्रीम हो जाता है मैं भी चाहती हूँ, बट डेफिनेटली उतना एक्सपीरियंस मेरे पास अभी तक नहीं है. बट अगर कोई चाहता है आदमी माउंट एवरेस्ट तक चढ़ना, तो फिर उसके लिए क्या क्या क्राइटेरियाज है जो आप पहले पूछते हैं, या फिर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं कि उसके पास्ट में उसका क्या रहा सारा का सारा एक्सपीरियंस? There is billions of people in the world, and billions thought and billions vision, you know. So regarding the climbing things, they have own purpose, own technique or own plan to climb or for the expedition or adventure. So regarding this Everest, like first of all, you have to see the Everest, right? Correct. So to see the Everest, you have to do either mountain flight in Nepal, or you have to go to the Everest base camp. Okay. So when you go to the Everest base camp, you will reach 5,700 meter altitude. So in this altitude, you will realize that you, like for example, you will ask yourself that, can I climb this Everest? Correct. How people are climbing until that altitude, while I'm here in 5,700 and I'm feeling so tired. You know, so sometimes this is not only about the tiredness, sometimes it is about the excitement. Correct. Kind of, oh wow, I can see this kind of beautiful scenery from 5,700. Then how if I go to the summit, what can I see from that level? So this kind of experience will give you the thoughts or dream, you know. Will I climb the Everest or not? So first of all, you have to go to the Everest base camp. और उसमें कितना कॉस्ट लगता है एवरेस्ट बेस कैंप जाने तक का? Cost, it matters with the service, or it depends with how you want to go. Okay. If you want to go directly by helicopter, you can do. If you want to go trekking 13 days, you can do. If you go 9 days trekking and come back by helicopter, so cost, it is absolutely depends on what kind of facility or that I'm the just standard opting you want for. you want to travel. Like from my company, we are providing at least $2,500 to like $7,000 for Okay. the Everest base camp trekking. Okay. So it depends in this between which service you want to go. Okay. So ये 7,000 से लेके 500 2500 so Yeah. 7,000 से लेके 2500 के बीच का कॉस्ट रहता है. तो US dollar. US डॉलर, करेक्ट. सो गाइज आपका 7,000 से लेके 2500 बीच का कॉस्ट रहता है. इसमें या तो आप ट्रैकिंग करके जा सकते हैं, या आप एक साइड ट्रैक करके दूसरी साइड आप हेलीकॉप्टर से आ सकते हैं, या दोनों साइड आप हेलीकॉप्टर से आ सकते हैं. एटलीस्ट आप एक बार एक्सपीरियंस करें कि आप जहाँ पे जाने वाले हैं वहाँ का कैसा माहौल है, कैसा वेदर है, कैसा कंडीशन है. आप एक हाई ऑल्टीट्यूड पे होते हैं, ऑल्टीट्यूड सिकनेस होता है, बहुत ठंडा वेदर होता है, वैसे कपड़े होने चाहिए, वैसे सबका इक्विपमेंट होना चाहिए. तो एटलीस्ट आप जहाँ तक पहुँचने वाले हैं उसका आप एक मिड लेवल तक पहुँचिए. इस वजह से 7,000 से लेके 2,500 के बीच में आप एक बार जाके आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, देख सकते हैं अपने ड्रीम को कि हाँ मुझे यहाँ तक पहुँचना है. Yes. उसमें आप ट्रैकिंग से लेके हेलीकॉप्टर तक का इन सब 3 तरीके हैं, तीनों में से आप कुछ भी चीज ऑप्ट कर सकते हैं. करेक्ट. इसके बाद फिर क्या? While you are doing this trekking to the base camp, and you start to dream like my next project or future project will be Everest. Correct. So before heading to the Everest, you need to try the another peaks. So going to the Everest base camp is just walking. You don't need any special equipment. You Got just it. need warm jackets, sleeping bags, nice boots for the walking. That's it.
So if you need to go, if you want to go to the Everest, you have to go before another 6,000, 7,000 peak. Okay. So while you are climbing those peak, you will need special equipments like crampon, special boot for the climbing, special jacket for the keep you more warm or more flexibility. So gloves, socks, everything will be special. And from the management, operator management, like we need a tent. To the base camp, tent is not necessary. But while you go to the other peak, tent is mandatory. Necessary. Yeah, tent is necessary. You will need cooking pots, special cooking pots, high food. There is those things one by one you will experience. And from the base camp, you start to dream to climb the Everest. So you, with the other peak, you start to realize you can climb or not. Correct. So if you invest for this another 6,000 or 7,000 meter altitude, you will spend like, let's say 10,000, 15,000 US dollar. Okay. If you forget this 10,000, 15,000 US dollar, you want to try directly to the Everest, then you need to invest like kind of $1 lakh. Oh. Yeah, your personal equipment and logistic, how to say, service and those things. More or less $1 lakh is very basic. So in this case, if you don't test yourself with this 6,000, 7,000 meter, maybe you will lose. You cannot go to the summit because you are not well prepared. Correct. But you will spend $1 lakh. Correct. Right? So that is something. 1 लाख रुपए पूरे आपके पानी में जाएंगे. It all goes in vain अगर आप पहले अपने आप को टेस्ट करके उसके लिए प्रिपेयर नहीं करेंगे कि आप वो चढ़ भी पाएंगे कि नहीं पाएंगे. That's why we always asked our valuable guest or client that how is your experience? Correct. What you have done before if you want to climb Everest. So in this case, if our clients, they reply, they answer us like, I have done Kilimanjaro, I have done Elbrus, I have done some other peaks, or Manasulu or whatever, then we accept very easily that, oh, okay, you can climb Everest. Okay, right. If they said like, oh, I just been to the Everest base camp or Annapurna base camp or some other only base camp or less than 6,000, then we are not taking their reservation for the Everest expedition, because it is their loss and it is also the high risk for their life. So we are not here to put them in the risks. Correct. Right? We are here to make them dream come true. So that's why we want to we want to do the safest and the successful trip. In that case, you need a experience, you need a right equipment, you need a right team. Those are the basic fundamentals. करेक्ट. सो दैट मीन्स गाइज कि आप अपने ड्रीम को फुलफिल करने से पहले एक बार अपने आप को टेस्ट तो करिए कि आप वहां तक पहुंच सकते हैं कि नहीं. और जो इन्होंने पीक्स बताए, जो इन्होंने ट्रैक्स बताए, अगर आप पहले वो सब ट्रैक्स कर चुके हैं, थोड़े 6,000 से ऊपर तक आप जा चुके हैं, देन डेफिनेटली आप एवरेस्ट ट्राई कर सकते हैं. बट आप अगर 6,000 तक पहुंचे ही नहीं हैं तो फॉर श्योर ये आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा. और अगर कोई इंसान है और वो बिल्कुल फ्रेशर है तो फिर उसको कितना महीने लग सकते हैं ट्रेन होने के लिए? At least 1 year. 1 year. Yeah. Like for example, tomorrow morning you go to the Everest base camp. Correct. It takes 15 days. And after 15 days, if you have enough budget, after this coming fall, you can try another peak, 6,000 peak. And then the same season or the next the coming winter, you can go another peak. Not only Nepal, other country also offer the climbing, like Elbrus or Kilimanjaro, like this. If you want to come again in the winter expedition, also very interesting in Nepal. So we have many 7,000 and 6,000 peak, like Lobuche Island Peak, Chulu is, there are 6,000 peaks, and 7,000 peak Amadablam, there are like
Zulu Faris. So though no, Zulu Faris is 6,000. Anyway, we have so many different altitude peaks, so you can test yourself in that peaks for the next, coming fall, and the next season or next spring you can try the Everest. So at least you need a 1 year preparation. Yeah. To test yourself and to prepare yourself. Yeah. अपने आप को पूरा तैयार करने के लिए एटलीस्ट आपको 1 साल लगते हैं. अच्छा, और ये जो हिमालय के ऊपर या फिर माउंट एवरेस्ट के ऊपर जो भी आप ये एडवेंचर जो प्लान करते हैं, ट्रिप प्लान करते हैं, ये कौन सा सीजन में होता है? स्प्रिंग सीजन. तो दिस इज समथिंग गाइस, स्प्रिंग सीजन, राइट? एंड दिस इज द करेक्ट टाइम दो अभी माउंटेन पे लोग चढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, और इसी वजह से शायद मैं इतने सारे फॉरेन टूरिस्ट यहाँ पे देख रही हूँ, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल हैव केम हियर टू जस्ट रीच टू द माउंटेन्स, या फिर वो 1 साल से पहले प्रिपेयर कर रहे थे और अब वो टाइम आया है जहाँ पे वो ऑलरेडी अपने आप को टेस्ट करके वहाँ पे जा सके. और ऑलरेडी इनका एक ग्रुप गया भी हुआ है, उनमें से एक इंसान है टेंडी, एंड ही एक्चुअली क्लाइंब द माउंटेन मोर देन 13 times and he is actually a co-partner of this business of Tag Nepal. तो आप इन पे काफ़ी अच्छे से ट्रस्ट कर सकते हैं. अच्छा, आप मुझको गोविंदा आप ये बताइए कि मेडिकली कैसे कैसे फिट होना चाहिए एक इंसान? Yeah, that's another good question. For the medical, first of all, you have to be very fit mentally. Correct. You have to believe yourself that you can climb. Correct. And second thing, physically, now so many, let's say, differently able people, they also even climbing the Everest with the big support or more strong support. Differently able people? Yeah, even they are doing. Oh. Yeah, so for you or for kind of normal people, they need to be physically fit. Whenever they have quite big issues in their health, like asthma, the other disease, if they are really serious, maybe they cannot. Other than until and unless if you are healthy, you can do the training, you can do Everest. Yeah. कुछ मेडिकली सर्टिफिकेशन चाहिए आपको वहाँ पे ले जाने के लिए? Yes, normally your doctor, whenever you are willing to climb Everest, I don't remember, or I don't know, sorry, I think we have to manage this. Yeah, sure. Yeah, this is also we work with the foreign partner or our team. Normally we always talk about the health fitness. The person who is not fit for the altitude or who is not healthy, themselves, they will realize that they cannot climb. Of course. So we don't particularly we don't test their health here. So you should not climb with this disease. We don't do that. So how to say, the person he is the risk owner. So he should not have big diseases. And sometime, who has a cancer or something like this, even they want to climb for this cancer, that for the awareness, with the issue. With the issue. Yeah, with the issue. Like एक motivational yeah. और I would say एक awareness climbing होती है जहाँ पे वो बता सके लोगों के लिए नहीं, मैं कैंसर होते हुए भी मैं ऊपर चढ़ सकता हूँ. तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए जिससे आपको चढ़ाई में या फिर आप जब माउंटेनियरिंग कर रहे होंगे तब आपको प्रॉब्लम आए. फॉर एग्जाम्पल एस्थमा इज वन ऑफ द बिग प्रॉब्लम, जहाँ पे क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी ऑक्सीजन की कमी है. अगर आपके पास एस्थमा होगा देन डेफिनेटली आप ब्रीथ आउट नहीं करेंगे, आपके चेस्ट में पेन होगा, यू कैन फेंट एज वेल. तो ये एक इशू बहुत बड़ा बन जाता है. आपको कोई लंग्स डिसीज नहीं होना चाहिए, आपको फटीग नहीं होना चाहिए. यू शुड बी एक्टिव इनफ और आपको एक प्रॉपर डाइट भी मेंटेन करना है थ्रू आउट द टाइम. तो ये सब चीज़ों का एक प्रॉपर मेडिकल फिटनेस चाहिए होता है बिफोर यू क्लाइंब. कोई परमिट लगता है जाने से? Of course, we have very special permit, Everest climbing permit. So for the foreigner or Westerner, it is $11,000. For Nepali, I think 1 lakh rupees. For Indian, I don't know exactly how much it is.
and we don't have Indian climbers, so we have not been practiced with this. अभी तक आपके पास इंडियन क्लाइंबर्स No. पहुंचे नहीं या फिर आपने कभी एंटरटेन नहीं करा? Maybe both side. So Indian climbers, this is a challenge for you कि आप टैग नेपाल आइए, आप प्रूव करिए कि yes India could be the one जो कि माउंट एवरेस्ट पे जा सकते हैं और वहाँ पे अपना देश का झंडा लहरा सकते हैं. वैसे कोई गया है माउंट एवरेस्ट पे इंडिया से अभी तक? We have got so many Indian NRN. Yeah, from Canada, Indian. NRIs, Yeah. correct. Oh, you are NRI. Ah. We are NRN. Yeah, we have so many Indian climbers, but they're from Dubai, Dubai they're and from something. Canada, USA, like this. पीक पे पहुंच के कोई इंडिया का फ्लैग लहरा रहा है अभी? From my company until now, no. No, not from your company. But I'm sure हमारा भारत का झंडा जरूर लहरा रहा होगा. Definitely. Definitely. There is a big expedition always every year from Indian Army. Yeah, Oh, Indian very Army. nice, very. So Indian Army used to Yes. be there. Great. अच्छा, कितना टाइम लगता है अगर मैंने सारे हर्डल्स पार कर लिए? फॉर एग्जाम्पल मैं 5000 6000 के लिए ट्रेन हो गई हूँ, मेरे पास एक मेडिकल फिटनेस भी है, मेरे पास परमिट है, मैंने आज से स्टार्ट करा अपना जर्नी, मैं कितने टाइम तक पहुंच पाऊंगी? 2 months. It takes me 2 months Yeah. to go there to Exactly. be back. अच्छा. Yeah. और 2 months is something उसमें प्लस माइनस हो सकती है या ऑन एवरेज? On average, we take 2 months expedition, and it depends with weather window. Especially for the Everest, the good weather window start from mid-May. Let's say after 15th May to end of the May. So in this 15 days is the summit time. Summit Okay. push. We call summit push. But before that, you have to do the rotation. We call another technical word is rotation. Like Everest stop is here, base camp is here. You go to camp 1, camp 2, camp 3, and back to the base camp. Oh. And again, you go to the camp 1, camp 2, maybe toss to the camp 4, and come back to the base camp. And third, only you go for the top. Okay, So but this ये is the practice for acclimatize with this altitude. Oh, I got it. That means guys, आप ये नहीं कि आप एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचे, आप एक बार में ही चढ़ गए और आगे. इसका मतलब क्योंकि जैसे ही आप ऊपर पहुंचेंगे एकदम से आपका ऑक्सीजन लेवल इतना डाउन हो जाएगा कि दैट यू माइट गेट फेंट. हम जब लेह लद्दाख गए थे, आपने हमारी पूरी सीरीज देखा होगा, हमने उसमें भी बताया था कि वहां पर भी हमारे को ऑल्टीट्यूड सिकनेस, हमारा हेडेक हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, हम ब्रीथ आउट नहीं कर पा रहे. बट दैट इज समथिंग ओनली लेह लद्दाख. यहाँ पे आप एक काफी हाई पीक तक जा रहे हैं. क्या होगा एग्जैक्टली हाइट? Base camp is 5,300. 300 Yeah. and peak? Peak 8,848.61 meter. 8,800 I would say. 8,848. 8,848 मीटर्स. आप इतना ऊपर जा रहे हैं तो ऑब्वियस बात है आपको एक्लिमेटाइज होने की जरूरत है. इस वजह से अकॉर्डिंग टू गोविंदा जो ने समझाया, बेस कैंप से आप पहले फर्स्ट या सेकंड कैंप तक जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड तक जाएंगे, फिर वापस आएंगे, नेक्स्ट टाइम में मे बी फोर्थ तक जाएंगे, वापस आएंगे, और ऐसे करके आप फाइनली एक बार पीक तक पहुंचेंगे, वापस आएंगे. Normally at the third time you plan for the summit. नॉर्मली थर्ड टाइम में आप पहुंच जाएंगे. तो इसका मतलब तभी ये पूरा 2 महीने का पूरा ड्यूरेशन होता है कि आप पीक तक पहुंच पाए, जिसमें आप रोटेशन करते हैं और आपका बॉडी अडेप्ट हो जाता है उसके अकॉर्डिंगली. गोविंदा, आप मुझको ये भी बताइए कि कितना क्रू मेंबर चलता है, कितने लोगों के साथ, और क्या कोई स्पेसिफिक नंबर आप इतने ही लोग ले जाते हैं एक साल में? No, there is no limitation like you can take only 10 or 100 or 500 like this. But we have permit system that in one permit we can adjust 15 people, 15 climber, 15 the foreigner, right? So in that case we need a licensed officer. It means the government will provide one officer that he will check and balance like anybody doing cheating or kind of how they are taking care the mountain and those things. So they are called licensed officer. We in short form we also call LO. LO. Yeah. So in one permit we can adjust 15 people. 15 people. So more or less
every year more or less 300 to 400 people only for the Everest. Yeah. And in one team, normally one climber is to one Sherpa, or if you are climbing, I have to support you, I have to help you, that at least one. Otherwise, it is the best on the service. Like if you feel that you may definitely climb with two Sherpa, then you are one and me and my.